Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yousuf. Today I am going to talk about the neurohypophysis, that is posterior pituitary. But before that, as per routine, one ayah from Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह अन-नहल की आयत है। तर्जमा इसका कि अल्लाह ताला अदल का, इन्नल्लाह यअमुरु, बेशक अल्लाह हुक्म देता है, बिल अदल, अदल का, वल इहसान, और भलाई का, नेकी का, व इताई ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, उनको अता करने का, व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य, और बेहयाई से के कामों से, नाशाइस्ता हरकतों से और जुल्म व ज्यादती से मना कर रहा है। तीन बातों का हुक्म अल्लाह पाक दे रहा है और तीन बातों से मना कर रहा है। याइज़ुकुम, वो तुम्हें नसीहत कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझ जाओ, तुम्हें नसीहत हो जाए। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about posterior pituitary. Posterior pituitary, as in the introductory lecture about the pituitary, we saw that this is extension from nervous system. It is an outgrowth from the hypothalamus. So that's why it is known as neurohypophysis. It develops as an outgrowth of the hypothalamus. So the cells in it, the pituocytes, they are like glial cells in the nervous system. They do not secrete any hormone. They are just the cells of the posterior pituitary, which we can call them as pituocytes. They are actually the supporting cells. They are supporting the nerve endings coming from the hypothalamus, and in those nerve endings hormones are stored and they are released when they are required. So these cells of the pituitary, posterior pituitary, they are actually like glial cells of the nervous system. They do not produce hormone. They are only supporting cells for the bulbous nerve endings of the coming from the hypothalamus. The hormones are stored in these bulbous nerve endings, and these nerves are coming from nuclei of the hypothalamus. We are going to see it. So posterior pituitary gland itself does not produce hormone. Hormones are actually produced in hypothalamus. They are brought to the posterior pituitary and they are stored in these nerve endings in the posterior pituitary, and they are then released. There are two hormones, you know it. The one hormone which is ADH, antidiuretic hormone, as the name shows, antidiuretic hormone, ADH. And the second name is vasopressin, because it has got a very important effect on the blood vessels as well. It increases the blood pressure, it causes the vasoconstriction. So its second name is vasopressin. ADH and vasopressin is the same. And the second hormone is oxytocin. So both of these hormones are produced in nerve cells in hypothalamus, in neurons in the hypothalamus. There are nuclei in the hypothalamus. Paraventricular nuclei primarily produces oxytocin, and the supraoptic nuclei in the hypothalamus produce ADH. So these are two sets of nuclei. These are small groups of the nuclei located in the hypothalamus. So the paraventricular nuclei produce oxytocin and supraoptic nuclei ADH. Then nerve fibers from these nuclei, they pass along the pituitary stalk. Nerve fibers, they pass along the pituitary stalk and they branch and they form spray type nerve endings and bulbous nerve endings in the posterior pituitary. So like this, that is, from the paraventricular nuclei, supraoptic nuclei, nerve fibers are coming through the pituitary stalk and they are branching, and in the posterior pituitary and these bulbous nerve endings, the hormones are stored. The cells of the posterior pituitary glial, they are glial cells, pituocyte, they do not produce any hormone. Hormone are produced there, they are transported along the nerve fiber in the exoplasm, and then they are stored in the posterior pituitary. If
if you cut the pituitary stalk here, if we cut the pituitary stalk here, so the source of the pituitary is blocked, but there is a transient fall. Cutting of the hypophyseal stalk leads to the transient reduction in the pituitary, but later on, after some time, normal secretion occurs from those cut nerve endings. जहां से काटी है पहले तो शुरू में खत्म हो गया, लेकिन उन कट नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन साइट को हमने नहीं छेड़ा इन दिस कटिंग. सो दी आफ्टर नॉर्मल सिक्रीशन विल occur from the cut nerve endings after a few days. The hormones, as I said, they are synthesized in the nerve cell bodies in the hypothalamus, and they are transported along the nerve fiber in the exoplasm. Now this transport is not a pure hormone. हम अभी हार्मोन को देखते हैं, 9 अमाइनो एसिड की हार्मोन्स हैं दोनों, 9 अमाइनो एसिड से. They are transported in combination with another protein which is also synthesized by the same neuron. That those proteins are known as neurophysins. So these are transported in combination with the carrier protein, which are no proteins for each hormone. One hormone ADH के लिए अलग protein है neurophysin, oxytocin के लिए अलग है. So they are neurophysins along the nerve fibers in the exoplasm. This combination of the this neurophysin and hormone is transported, and then when they are brought to the posterior pituitary, they are stored in the posterior pituitary in the bulbous nerve endings, and then they will be released upon requirement, and their release will be like release of acetylcholine from the skeletal muscle nerve endings. वो कैसे होती थी? Nerve impulse comes in the same nerve fiber. जिस nerve fiber में stored है, nerve impulse will be coming from the hypothalamus in these nerve fiber, and there will be a release of the hormone. So they are released by exocytosis due to the nervous impulses from the hypothalamus. Now, chemical structure of both these hormones, both are polypeptides, small polypeptides. That is, only 9 amino acids are there. ADH का structure is, that is, you can see these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These amino acids, I'm not going to name the amino acids. So these are 9 amino acids, and oxytocin has got the 9 amino acids. One thing, there is only difference of these 2 amino acids here. In at number 3 position, in ADH it is phenylalanine, and in this oxytocin it is isoleucine. And here the second last, the 8th one, is the arginine in ADH and is leucine. This is only difference. So there is difference of only 2 amino acids in the structure of both these 2 hormones. So both are similar, and though both the hormones are similar, so there is overlapping of the functions as well. ऑक्सीटोसिन का भी थोड़ा सा फंक्शन एडीएच की तरह है, और एडीएच का भी फंक्शन थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन जैसा है. हम देखेंगे देयर इज फंक्शन आल्सो ओवरलैप बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, ओनली डिफरेंस ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स. नाउ एडीएच इज मोस्टली प्रोड्यूस फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, पहले भी हमने बात की, लेकिन दैट स्मॉल अमाउंट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ज्यादा सारा पैदा होती है ऑक्सीटोसिन, लेकिन कुछ एडीएच भी पैदा हो सकती है. सो एडीएच प्राइमरीली सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई की है. फंक्शंस क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज एंटी डायूरेटिक. इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस इन द यूरिन. इट डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द यूरिन. ये कैसे करती है? बस ये इसका बड़ा फंक्शन है, इसका नाम भी इसी वजह से है. द यूरिन फॉर्मेशन, अगर आपने किडनी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लेंगे. दैट इज यूरिन filtrate is formed at the glomerulus and in the Bowman capsule, and it passes through the kidney tubule, and it passes through the loop of Henle and the collecting ducts, and last part of the nephron, that is the collecting ducts and the collecting tubules, they absorb water only when ADH is present. Without ADH, the collecting ducts and the tubules are impermeable to water. तो अगर ADH नहीं होगी, water जो वहां पहुंचेगा, that will be lost in the urine. And अगर ADH मौजूद होगी, then water absorption will occur. So collecting ducts, without ADH, all the water entering to these tubules, collecting ducts and tubules will be lost in the urine. And ADH greatly increases the permeability of these areas, that is the collecting ducts and the tubule, for water. So most of the water is absorbed there. Large amount of water is absorbed by ADH as well here.
and this loss of water in the urine is reduced. So that's why it is known as anti-diuretic hormone. Now, mechanism, how this causes this more absorption of water, it is not very clear. Something we know it. That is, it is not very clear. We know that is in the presence of ADH, there are special vesicles present in the cells of these tubules, collecting ducts and tubules. There are some floating vesicles present in the cells. When ADH is there, special vesicles containing protein aquaporine, they are present inside the cells of the collecting ducts, and ADH inserts these cells into the cell membrane. ये cell membrane के अंदर नहीं होते ADH के बगैर. ADH होगी तो ADH will cause insertion of these aquaporine proteins into the cell membrane. Cell membrane में जब insert हो गए, these are pores, aquaporine, water के pores, aqua means water, aquaporine, these are water pores, और ये फ्लोटिंग वेजिकल की फॉर्म में होते हैं. एडीएच इनको सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट करती है. सो द वाटर के चैनल सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होंगे, एंड सो दिस विल कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसका मैकेनिज्म, it is ADH is a protein, it is a small polypeptide, so it cannot enter into the cell membrane. It should act through cyclic AMP mechanism, हमने डिस्कस किया हुआ है. So HR complex, hormone receptor complex is formed in the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन में बनेगा तो साइक्लिक AMP is formed. We have discussed the general mechanism of action. Cyclic AMP is formed. So this cyclic AMP is responsible for what? What we have talked about, कि ये aquaporine को insert करेगी. This cyclic AMP causes phosphorylation of the vesicular elements, वो aquaporine जो vesicles हैं, and it causes the insertion of these aquaporine vesicles into the cell membrane. ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इतना हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी पैदा होती है. दिस काजेज समहाउ इंजर्शन ऑफ दीज, शायद फास्फोराइलेशन लिखा हुआ है, ये फास्फेट रेडिकल ऐड होने से कुछ इसका होता है. इट इज इंसर्टेड इनटू दी, दिस प्रोटीन इज इंसर्टेड एंड वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, जब एडीएच ना हो तो एक्वापोरिन जो इंसर्ट हुए थे वो वापस खत्म हो जाएंगे. So in the absence of ADH, aquaporins are removed from the cell membrane. वो खत्म हो जाएंगे. It becomes again impermeable to water. So that is how that is the antidiuretic effect. The second name of this hormone is vasopressin. Because of this effect, vasopressor effect, it causes vasoconstriction. It is very powerful vasoconstrictor. आपने शायद CVS में या blood में पढ़ा होगा. It is a powerful vasoconstrictor. That is powerful vasoconstrictor. It also causes vasopressin, and vasoconstrictor effect becomes evident at higher levels. आम जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ये एंटी डायूरेटिक इफेक्ट के लिए जो एडीएच है वो बहुत थोड़ा लेवल है, उसका वेजोप्रेसर इफेक्ट निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है. वेजोप्रेसर इफेक्ट इसका सिर्फ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच जब ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा कब प्रोड्यूस होगी? जब ब्लड प्रेशर गिरेगा, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम. शायद सीवीएस में कहीं आइडिया इसको पढ़ा होगा, सीवीएस जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा then ADH will be produced and large amount of ADH will be produced. So vasoconstrictor effect becomes evident in high concentration of this. Decreased blood volume is the stimulus. ये कैसे? Decreased blood volume causes less stretch of the right atrium. आपको पता है, more blood volume, more stretch of the right atrium. Stretch of the right atrium inhibits ADH normally, but when it is not stretched, it will stimulate. So less stretch. Normally, stretch receptors in the right atrium, these send nervous signal to the hypothalamus, and ADH or vasopressin, अब इसका नाम है, it will be reduced. It will be reduced. It will not be released. But opposite, when the water receptors are not stretched because of less volume of the blood, किसी को hemorrhage हो, ये low blood volume causes absence of this inhibitory signals. ये जो इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं ये हाइपोथैलेमस से नॉर्मली स्ट्रेच इनहिबिट्स. जब स्ट्रेच नहीं होगा तो इनहिबिटरी सिग्नल्स आर गॉन, मोर एडीएच विल बी प्रोड्यूस, एंड दिस एडीएच, quite high concentration of ADH is responsible for generalized vasoconstriction. Sorry body के vasoconstriction, though resistant vessel, they will cause the constriction, and this will increase the peripheral resistance, and this will increase the blood pressure. So these are the two important effects. Now regulation. रेगुलेशन की एक बात तो हम अभी करके आ गए. रेगुलेशन ऐसे ही है दैट जैसे जो
हमारा राइट एट्रियम, वॉल्यूम, this mechanism is regulating the release of ADH from the hypothalamus. अगर atrial stretch है, it is inhibited. atria अगर stretch नहीं हो रहा है, it is stimulation. It will cause more release of ये भी है. लेकिन ये जो ADH वाला mechanism है, ये इसकी osmotic regulation कहते हैं. What is osmotic regulation? ADH is produced mainly by supraoptic nuclei of the hypothalamus. पहले बात कर चुके हैं. Whenever the body fluids are hypotonic, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? वाटर ज्यादा है हमारी बॉडीज में. हाइपोटोनिसिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इट स्टिमुलेट्स द ऑस्मोरिसेप्टर्स. सॉरी बेटा, दिस इज नॉट हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिसिटी. Hypertonicity, when the body fluids are concentrated, water is less. This hypertonicity stimulates the osmoreceptors in the hypothalamus. Hypothalamus में osmoreceptors हैं. उनका काम क्या है? उनके अराउंड जो फ्लूइड है, अगर उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, क्या मतलब है? पानी कम है, आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, the hypertonic solutions है, so this hypertonic solution will suck water out of those osmoreceptor cells, so shrinkage of the cells will occur. बाहर osmotic pressure ज्यादा है तो ये सेल shrink करेंगे osmoreceptor cell. This is stimulation. So they will be stimulated. क्या मतलब? The shrinkage will occur and in the hypothalamus and they will send signals to the supraoptic nuclei. ये है, यहां से ऑस्मोरिसेप्टर से ये जब स्टिमुलेट होंगे श्रिंकेज की वजह से, दे विल स्टिमुलेट द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड दे विल सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया से फिर देन इंपल्सेस विल गो थ्रू द सेम नर्व फाइबर अलोंग द पिट्यूटरी स्टॉक एंड दिस विल कॉज द रिलीज ऑफ एडीएच. ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन है. और उल्टा भी आप अप्लाई कर लें. ये दोबारा मैं बोलता हूं, जब बॉडी फ्लूइड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, पानी बॉडी में कम हो जाए, इट हैड टू बी कंजर्व. ज्यादा पानी में कम हो गया तो इसको कंजर्व करना है, तो कैसे होगा? दैट इज हाइपरटोनिसिटी विल स्टिमुलेट द ऑस्मोरिसेप्टर इन द फॉर्म ऑफ श्रिंकेज ऑफ द सेल एंड दिस विल सेंड सिग्नल टू द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई. सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई विल सेंड सिग्नल, वहां से जा रहे हैं जहां से एडीएच प्रोड्यूस हो रही है, अलोंग द पिट्यूटरी स्टॉक एंड इट विल कॉज द रिलीज ऑफ एडीएच इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इट विल बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ चुके हैं. दे विल इंसर्ट एक्वापोरिन इनटू द सेल्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल अकर इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. हमने बात कर लिया. नाउ अपोजिट ऑफ दिस, व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी, आपने पानी ज्यादा पी लिया, आपने 3-4 गिलास पानी पी लिया ऊपर, तो क्या होता है? योर बॉडी फ्लूइड्स आर डाइल्यूटेड. हाइपोटोनिसिटी विल कॉज इनहिबिशन ऑफ दीज ऑस्मोरिसेप्टर. इनहिबिशन क्या है? दे विल स्वेल अप. श्रिंकेज इज stimulation and swelling up of those osmoreceptor is inhibition. So swell up करेंगे, number of impulses will be reduced and there will be no release of ADH. So osmoreceptor inhibition will cause the decrease production of ADH and decrease absorption of water and this water will be lost in the urine. ADH is said, इसको बाद में मैं बोलता हूँ. water आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप ज्यादा पानी पियोगे फौरन पेशाब आने लगता है. उसका मैकेनिज्म ये है, दैट इज एडीएच इनहिबिट हो जाएगी. एडीएच नहीं होगी इन लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो कहां जाएगा? ब्लैडर में जाएगा. इट विल बी यूरिनेशन. ये एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रेड में लिखा है. एडीएच इज सेड टू बी द रेगुलेटर ऑफ सोडियम आयन. सोडियम का जिक्र कहां से आ गया? सोडियम के साथ इसका ताल्लुक से नहीं, वो तो एल्डोस्टेरोन है, लेकिन इसका ताल्लुक ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड से तो है ना. ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन सोडियम एंड क्लोराइड. तो जब हम कहते हैं कि इट इज रेगुलेटिंग द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ज्यादा हाइपरटोनिक हो तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू होगी, हाइपोटोनिक होगी तो वाटर लॉस शुरू होगी. सो इट इज रेगुलेटिंग द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड. इसका क्या मतलब है? ऑस्मोलैलिटी इज primarily sodium ion concentration. So that's why we can say ADH is responsible for the regulation of sodium ion concentration. हालांकि सोडियम पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, वाटर पे इफेक्ट है. लेकिन सोडियम आयन कंसंट्रेशन वो जो 140 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर है, दैट इज मेंटेन बाय एडीएच एज वेल. दूसरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन मोस्टली प्रोड्यूस बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. उसी तरह मैं पहले बोल चुका हूं. और थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द एडीएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, दैट इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई.
वहां से भी प्रोड्यूस होते हैं, और उसी तरह इट इज ट्रांसपोर्टेड in combination with the neurophysin to the posterior pituitary. It is stored in the bulbous nerve endings in the posterior pituitary. Now the functions, इसका नाम जो बता रहा है ऑक्सीटोसिन, इस वजह से इसको इस फंक्शन को पहले डिस्कस कर रहा हूं। इसका नाम बता रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिक ड्रग या केमिकल हम उसको कहते हैं विच काजेस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस को कंट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज हो उसको हम ऑक्सीटोसिक ड्रग कहते हैं। अर्गोमेट्रीन आप पढ़ेंगे यहाँ पे फार्माकोलॉजी में, अर्गोमेट्रीन एक ड्रग है विच काजेस द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, उसको ऑक्सीटोसिक ड्रग कहते हैं, कोई भी केमिकल जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करे। तो इसका फंक्शन ये हमें पता है। So it causes contraction of the uterus and it helps in the process of the delivery of the baby. At the end of gestation, 40 weeks की जो प्रेगनेंसी है, लेबर प्रोसेस में partially लिखा हुआ है, partially helps the birth process. It is not absolutely necessary. It helps. बाकी और मैकेनिज्म है लेबर को प्रोसीड करने के, लेकिन ऑक्सीटोसिन ना हो तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है, इसकी हेल्प की जरूरत होती है। सो पार्शियली हेल्प्स द बर्थ ऑफ द प्रोसेस, लेबर इज प्रोलॉन्ग्ड इफ दिस हार्मोन इज एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट हो तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है। सो इट हैज बीन सीन कि कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सर्विक्स को इरिटेट करो तो ऑक्सीटोसिन पैदा होती है, और लेबर में भी होता भी यही है। व्हेन बेबी इज pushed into the cervix, बेबी जब सर्विक्स में पुश होता है, इट causes the irritation of the cervix और ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड, और जितना ज्यादा पुश होता जाएगा उतना सर्विक्स स्ट्रेच होता जाएगा, उतनी ज्यादा। मैंने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल इसकी दी थी ना, दैट इज कि पॉजिटिव फीडबैक कैसे, एक दफा बेबी का हेड सर्विक्स में टच हुआ, उसको डायलेट किया, इरिटेशन ऑफ द सर्विक्स हुई, इट विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, सिग्नल विल गो फ्रॉम द सर्विक्स टू द हाइपोथैलेमस एंड फाइनली देयर विल बी रिलीज ऑफ this oxytocin from the posterior. This will cause the more powerful contraction. Contraction will cause the push of the baby. Baby will be pushed into the cervix, head उसमें ज्यादा जाएगा. More stretch will cause more irritation and more production of oxytocin. This positive feedback, this vicious cycle will go on till the birth of the baby. So irritation of the cervix by any means causes more production of oxytocin. So head of the baby when it stretches, it causes the cervix to stretch, and irritation of the cervix causes more and more production of the oxytocin till the birth of the baby. The nervous signal from this stretching cervix, they increase the oxytocin production from the posterior pituitary via hypothalamus. So it is a positive feedback cycle till the completion of the labor. Now the second function which should be mentioned as number one, because this function cannot take place without oxytocin. Labor can proceed without oxytocin, but this milk ejection of the milk, let down of the milk cannot take place without oxytocin. Both functions are important, but I should say that this ejection of milk is more important. How this is, that is, when milk produced in the breast is collected in those lobules, alveoli of the gland, उसमें पड़ा होता है। तो बेबी ने सब कहां से करना है, ducts they converge on the nipple तक converge करते हैं, and milk is in the alveoli. Milk has to be brought into these ducts. इन डक्ट में जब तक नहीं लाएगा बेबी कैसे उसको पिएगा, डक्ट में आएगा। डक्ट में लाने के लिए दिस ऑक्सीटोसिन इज हेल्पफुल। मिल्क एक्सप्रेस्ड आउट ऑफ द एल्वेओलाई इनटू द डक्ट, कैसे, सकलिंग स्टिमुलेशन ऑन द ब्रेस्ट, बेबी जब दूध पीता है मां का ऑन द ब्रेस्ट, इट कॉजेस दिस सेंसेशन ऑफ द सकिंग on the nipple and on the areola. This sends nervous signal to the suckling of the stimuli, signal through the sensory nerves. Sensory nerve जा रहे हैं to the sensory cortex, and from there signal will go to the paraventricular nuclei, and from the paraventricular nuclei the signal will go to the posterior pituitary, and it will cause the release of oxytocin. So it is nervous mechanism. The sensory stimuli from the breast, it will cause the production of oxytocin, and this oxytocin करती क्या है, ये alveoli जो हमने कहा है breast के, इनके around there are muscular elements जिनको कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल एपिथेलाइड सेल्स हैं, जिनके अंदर ये
कंट्रेक्टाइल एलिमेंट मौजूद है, एक्टिन एंड मायोसिन लाइक फिलामेंट्स आर मौजूद, तो दे आर नोन एज मायो एपिथेलियल सेल्स अराउंड द एल्वियोलाई। जब वो कंट्रैक्ट करेंगे इट विल कॉज स्क्वीजिंग एक्शन ऑन द एल्वियोलाई एंड मिल्क विल बी ब्रॉट इनटू द डक्ट्स एंड बेबी कैन रिसीव, यहाँ से बेबी रिसीव कर सकता है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। यू कैन इमेजिन माँ एक तरफ दूध पिलाती है तो अगर वहां काम हो जाता है तब तक इधर कलेक्ट हो जाता है दूसरी साइड पे मिल्क लेट डाउन अकर्स, क्योंकि मायोएपिथेलियल सेल तो दोनों साइड पे ब्लड में जा रही है ऑक्सीटोसिन, तो इट विल कॉज दी। सो दीज आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ द। तो ऑक्सीटोसिन की स्टिमुलाई और भी हैं, बेबी जब रोता है तो ये भी नर्वस सिग्नल्स हैं, लेट डाउन ऑफ द मिल्क उसमें भी हो सकती है, और इसके अलावा भी एक आध कोई फंक्शन है, बट दीज आर दी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो तो हमारी होगी इंशाल्लाह थायराइड हार्मोन को। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल दें, इंशाल्लाह मैं उनका आंसर करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इन थायराइड हार्मोन। हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच।